Hello everyone. Welcome to physics lecture number 12 at Global Career Academy. Today we are going to discuss about field due to uniformly charged thin spherical shell. It is topic number 1.15.3 and it is very easy topic. So let us start. First of all, let us recall that what was sigma. So sigma was uniform surface charge density. Okay. Over here the case is a thin spherical shell. तो आप इसको कैसे इमेजिन कर सकते हो? यू कैन कंसिडर टेनिस बॉल और एनीथिंग लाइक दैट. ओके, बट वो मेटल का है विच कैन हैव अ चार्ज. ओके, तो यहाँ पे एक थिन spherical shell आप देख रहे हो. ओके, now you just consider that it has a radius of capital R. Okay, it has a radius of capital R and we are asked to find out what is the field due to this uniformly charged thin spherical shell. Uniformly charged का मतलब है the charge is distributed all over the surface uniformly, right? Okay, so as you know, when we are saying that के field measure करना है, तो you have to take a particular point at which you want to find out the field, right? So in this case we have two different cases. Let us say point P is there and I want to find out the field at point P. So P can exist. मान लो कि मैंने P यहाँ पे इमेजिन कर लिया. ओके, सो यू कैन सी दैट द पॉइंट P इज आउटसाइड द शेल, राइट? इट इज outside the shell. Okay, let us say it is small r distance away. तो यहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं. एक है P है वो outside the shell है, और दूसरा वाला केस है जिसमें I am considering that P is inside the shell. Okay, so again I will take the distance as small r, but you can understand that over here it's small r is less than the capital R, right? Okay, तो यहाँ पे point P is located inside the shell. Okay, it is inside the shell. So इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये होगा कि over here the small r is greater than capital R, over here the small r is less than the capital R, right? तो इस तरह के दो केसेस हो गए. Another thing which I want to recall or remind you is that Gauss's law. So Gauss's law में what was the Gauss's law? So it was phi equals to q upon epsilon 0. Okay, and in this case आप phi कैसे कैलकुलेट करते थे? So phi was like E vector E electric field dot delta S, right? Okay, in which the delta S is a Gaussian surface that you were taking, right? Okay, what was Q? Okay, so Q was the term Q includes the sum of all the charges enclosed by the Gaussian surface. तो इसको find out करने के लिए we were taking the help of the charge density. अगर आपको continuous charge density वाला टॉपिक याद हो तो it is sigma it equals to delta Q by delta S, right? And through this I can always write down delta Q can be equals to sigma into delta S. तो चार्ज जो भी लिखना है वो हम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड विद द सरफेस एरिया के टर्म्स में लिखने वाले हैं. दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड दिस इज द एरिया. ओके, so I hope this is what you have understood. And now we are going to take the first case. First case क्या है? The field is outside the shell. Okay, तो यहाँ पे आप जो ग्रीन में देख रहे हो, let us consider that it is a thin shell. जो ग्रीन में देख रहे हो it is a thin shell. Okay, let us say the center of the shell is to be denoted by O, right? Okay, and we have already discussed that from center to the thin shell surface distance is to be denoted by capital R, right? Okay, ये पूरा चार्ज्ड सेल है. ओके, यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ से पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो निकल रही है. ओके, नाउ केस कौन सा है? द पॉइंट P is outside the shell. Okay, so I am considering that
the point P is located somewhere over here. Okay, so you can say that the distance from point O to R is, let us say, small r, and you can see that the small r is greater than capital R, right? Okay, now you have to choose a Gaussian surface such that it covers the point P at which you want to find out the electric field. So obviously you can select a Gaussian surface, okay, which is also spherical, okay, which is also spherical, and it covers the point P, right? Now it's time to apply the Gauss's law. तो Gauss's law के हिसाब से हम चले, so phi is equals to q अपॉन एप्सिलॉन 0. ओके, अभी हम सिर्फ अगर phi की बात करें, okay, phi electric flux through this Gaussian surface, okay, then we know that it is E dot delta S, it is a dot product. अभी आप बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो कि ये एक पॉइंट चार्ज है, ओके, पॉजिटिव है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दैट इज आउटवर्ड, ओके, दैट इज आउटवर्ड. अभी आप इसको एक स्फीयर इमेजिन कर लो, तो इसके जो रेडियल वेक्टर्स हैं दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा एस. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एंड द सरफेस वेक्टर बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड दैट इज हाउ द एंगल बिटवीन देम इज जीरो. थीटा जीरो हो गया तो कोस थीटा भी 1 हो जाएगा, कोस जीरो इज 1, एंड दैट इज हाउ आई कैन राइट ओवर हियर E डेल्टा एस. ओके, नाउ E डेल्टा एस में E एज इट इज रखना है. व्हाट इज डेल्टा एस? सो डेल्टा एस इज द सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस. यहाँ पे हमें हम लिख देते हैं, चलो आई विल मेंशन इट ओवर हियर दैट दिस इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी. ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा. एंड ये जो आउटर सर्कल है वहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं, दिस इज द गॉसियन सरफेस that I have taken. This is the outer sphere is the Gaussian surface. Okay, so what is the area of this Gaussian surface? ये जो बाहर वाला sphere है उसका एरिया कितना होगा? So your answer is 4 pi r square, right? Surface sphere का जो भी एरिया है उसका इक्वेशन मैंने सिंपल लगाया है, so that is E into 4 pi r square. तो ये हो गई लेफ्ट साइड की बात. फाई हमारा एकदम से क्लियर हो गया है. अभी बात करते हैं Q की. सो व्हाट वाज Q? तो Q इंक्लूड्स सम ऑफ ऑल द चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. ठीक है, तो देखो कि आप अगर ये सरफेस गॉसियन सरफेस आपने चूज की है, लेकिन यहाँ पे चार्ज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? चार्ज स्टार्ट हो रहा है, ये ग्रीन वाला है वहाँ पे चार्ज है, ग्रीन वाला स्फीयर है वहाँ पे चार्ज है. उसका एरिया उसका रेडियस कितना है? इट इज कैपिटल R, एंड दैट इज हाउ आई शुड राइट इट लाइक दिस. यहाँ पे मैं Q के लिए अगर कैलकुलेशन करना चाहूँ, सो Q कैन बी गिवन एज सिग्मा इंटू डेल्टा एस. लेकिन ये डेल्टा एस डैश दिखा रहा हूँ क्योंकि ये इसका एरिया अलग होने वाला है, राइट? सो सिग्मा इंटू डेल्टा एस डैश. सो सिग्मा डेल्टा एस डैश जो इनर स्फीयर है उसका एरिया कितना होगा? सो इट इज 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर. ओके, sigma into 4 pi r square, capital R square. Now I'll put both these values over here, so it will be E, phi की वैल्यू मैं रख रहा हूँ, ओके, into 4 pi small r square equals to sigma into 4 pi capital R square upon epsilon 0. So if I will simplify this and if I want to make the subject E, okay, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर सब्जेक्ट बना लूँ इसमें, 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो जा रहे हैं, सो आई कैन सी दैट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर. सो दिस इज हाउ यू कैन राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. आप चाहो तो आप एक दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. इफ आई मल्टीप्लाई, इफ आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सो अगेन आई विल यूज दिस फॉर्मूला. यहाँ पे सिग्मा भी है और r स्क्वायर भी है, 4 पाई है वो मिसिंग है, सो आई कैन राइट दिस 4 पाई
सिग्मा आर स्क्वेर अपॉन 4πε0 आर स्क्वेर, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये पूरा का पूरा हो गया है स्मॉल क्यू अपॉन में लिख सकता हूँ 4πε0 आर स्क्वेर एंड दैट इज इक्वल्स टू ई, राइट। ओके, नाउ ये तो बात हुई सिर्फ मैग्नीट्यूड की। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि ये एक स्फीयर है। अगर ये एक स्फीयर है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियल वेक्टर। ओके, सो रेडियल वेक्टर सेंटर से बाहर आता है एंड इट कैन बी, यू कैन हैव एनी डायरेक्शन, स्फीयर में से कोई भी डायरेक्शन में से वो बाहर निकल सकता है। ओके, इट इज इन एवरी डायरेक्शन। So I am just representing the electric field vector E which can be given as, ये सेम लिखना है आपको और उसके बाद आपको एक रेडियल वेक्टर का डायरेक्शन देना है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया आर कैप, इट इज आर कैप। सो आर कैप इज व्हाट? इट इज अ रेडियल वेक्टर। नाउ इन दिस वी हैव टू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। ओके, what happens if q is greater than 0 and what happens if q is less than 0? If q is greater than 0 that means it is a positive charge. अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो we can say that the direction of electric field is radially outward. If q is less than 0 तो ये नेगेटिव चार्ज है, that means it is radially inward. Okay, so that is what you have to take care. अभी अब देखो ये इक्वेशन ध्यान से देखो, क्या हम ये पहले कर चुके हैं? क्या ये इक्वेशन हम पहले कर चुके हैं? बहुत पहले हम ये इक्वेशन कर चुके हैं। यू विल सी दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज। ओके, तो ये सेम इक्वेशन है, तो उसके बारे में यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा है। पॉइंट्स आउटसाइड द शेल द फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज शेल is as if the entire charge of the shell is concentrated at its center. तो आपको ये शेल दिखाया है, आप उसको एक पॉइंट मान सकते हो और पॉइंट मान के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा सकते हो। दिस बोथ थिंग्स आर सेम। इक्वेशन वाइज, आंसर वाइज, इलेक्ट्रिक फील्ड के आंसर वाइज दोनों का आंसर सेम आएगा, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द अनदर केस, ओके, which is field inside the shell. Okay, so in this case we have to take the p inside the shell. तो ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हो that is the shell. Okay, and this is the center. I will denote it with O, and from O to the shell distance is again capital R. Now I am taking another point. Let us say this is point P, and from point O to P the distance is small r, and as you can see the small r is less than the capital R. Again we are going to do the same thing. I'll apply the Gauss's law. So phi can be given as q upon epsilon 0. Okay, now what is phi? Okay, so it will be same as the previous case. Okay, E dot delta S करके आपको लेना है. So E delta S था 4 pi and the small r square. Again I will write I'll write it over here that this is a surface charge density, right? This is the surface charge density. Okay, but the inner circle, यहाँ पे जो आप अंदर वाला सर्कल देख रहे हो, that is what I have selected as a Gaussian surface. Okay, यहाँ पे ये हमने चूज किया है Gaussian surface, right? So फाई की वैल्यू हमने रख दी है, गॉसियन सरफेस की वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर, दैट कैन बी गिवन एज यहाँ पे Q. व्हाट वाज Q? द चार्ज विच इज एनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, राइट? ओके, हमारी गॉसियन सरफेस ये है. ओके, इसके अंदर कितना चार्ज है? इसके अंदर तो कुछ नहीं है भाई. ओके, जो भी है वो ये ग्रीन वाला पोर्शन है और वो गॉसियन सरफेस के बाहर है, अंदर कुछ नहीं है. दैट मीन्स द चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस कम्स टू 0, राइट? ओके, एंड दैट इज हाउ आई कैन कंक्लूड दैट द फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड thin shell is 0 at all points inside the shell. अगर शेल है तो उसके अंदर कोई पॉइंट आप कंसिडर कर रहे हो तो उसके ऊपर कोई भी फील्ड नहीं लगेगी. ओके,
So I'll write that E is 0. Okay, inside the shell it is 0. So I'll also mention the condition, right? Okay, so that is how you have to calculate for the shell. Thank you.